starting with the topic AJAX with HTTP request. First of all, starting from the definition of the AJAX. AJAX is a asynchronous. J stands for JavaScript and X stands for extensible markup language. It is not a programming language. AJAX just use a combination of the XML HTTP request object and HTTP DOM. It means that a browser built in XML HTTP request object. It means that to request the data from a web server, and JavaScript and HTML DOMs, it means to display or use the data. AJAX is nothing but a browser built in XML HTTP request object to request data from the web server. And JavaScript and HTML is used to display the data. AJAX allows web pages to be updated asynchronously by exchanging data with a web server behind the scenes. That it means that how AJAX works. For example, if we want to browse any data with the help of internet, so what the browser can do here, and for example in an event occur, create any XML HTTP request object and send HTTP request with the help of internet to the server. Then what the server will proceed, it process HTTP request, create a response and send data back to the browser with the help of internet. And in the second section, browser process the return data using JavaScript, update page content. AJAX is an event occur in a web page, that a page is loaded, a button is clicked. फॉर एग्जाम्पल इन AJAX इसका मतलब क्या है AJAX का एग्जैक्टली कि जब भी हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम अर्लियर हम क्या करते थे कि गूगल पे हमने कोई भी रिक्वेस्ट, अगर कोई भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है तो हम एक नाम लिखते थे, उसके बाद कोई भी फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा खोलना है तो जावास्क्रिप्ट हम टाइप करते थे, उसके बाद वो एक पेज रिफ्रेश होके एक रीलोड होता था, उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर हम करते थे. लेकिन फॉर एग्जांपल that kind of information we previously have. For example हम गूगल में कुछ भी लिखा and then click, हमने सर्च उस पर क्लिक किया and after that हमें वो गूगल पे एक पेज पूरा रिफ्रेश होके रीलोड होके हमें सेम इंफॉर्मेशन के बारे में बताता था. लेकिन नाउ अ डेज विद द हेल्प ऑफ AJAX we just need to write only 1 or 2 letters and the different upcoming related topics will below in the line. For example, we want to search Roger Federer in this video, and the ROG written here, and all the related topics related to the Roger will display in the below section. So this is possible with the help of AJAX. AJAX अकेला कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन with the help of JavaScript and XML it becomes a powerful tool, but it is not a programming language. Next, the magic spell behind this. What the magic spell? The magic spell is this कि we want to search anything and we write it on the Google and Google will show all the related items. That this will possible because of the AJAX. So behind the AJAX, it is asynchronous JavaScript. What do you mean by asynchronous? Asynchronous, it means we can send a request to the server and continue user interaction with the user without waiting for the server response. Once a program arrives, a designated area in a user interface will update itself and reflect the response information. Whole page need not to be reloaded. फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक की, अगर हम आजकल हम फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक में हम क्या करते हैं, वी वांट टू लाइक एनी पोस्ट, तो हम डायरेक्ट लाइक करते हैं और वो अपडेशन हमें आ जाती है. अगर हम कोई भी कमेंट करना चाहते हैं वो एकदम से हमें कमेंट हमने किया और वो हमें अबव अपर सेक्शन में वो शो होने लग जाता है. लेकिन विदाउट द AJAX वो क्या होता था कि वो पेज पूरा रीलोड होता था, रिफ्रेश होता था, तो उसमें क्या है, इट विल बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग इन अर्लियर डेज. बट विद द हेल्प ऑफ द AJAX
Now it is done within a minutes, within a seconds. So asynchronous JavaScript and XML is a client-side technique that combines a set of knowledge, known technologies in order to create faster and more user friendly web pages. We can set that Ajax provide an ability to communicate with the server asynchronously. So what the Google suggest here, Google suggest is using Ajax to create a very dynamic interface. When you start typing in Google search box, a JavaScript sends the letter off to a server and the server returns a list of suggestion. So